अब हम आर्टिकल 14 के ऊपर कुछ केस लॉज को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द केस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस Union of India. अब in this case, the custom duty was based upon the circulation size of the newspaper. यानी फॉर एग्जाम्पल इंडियन एक्सप्रेस का जो सर्कुलेशन का साइज है वो 10,000 है एंड हिंदुस्तान टाइम्स का 5,000 है. यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स विल हैव टू पे लेसर कस्टम ड्यूटी. यानी कौन सा न्यूज़पेपर कितनी कस्टम ड्यूटी को पे करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन साइज कितना है. अब इस रूल को चैलेंज किया गया था एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस रूल इज वैलिड एंड हियर देयर इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन and there is no violation of article 14 of Indian Constitution. Okay. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है बीके यादव वर्सेस JMA Industries. Here it was held that there is no distinction between judicial and quasi-judicial bodies when it comes to application of principles of natural justice. यानी judicial bodies और quasi-judicial bodies दोनों टाइप ऑफ बॉडीज को natural justice के जो प्रिंसिपल हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है भगवंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब एक केस जो है इट इज बेस्ड अपॉन न्यू पेंशन स्कीम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003. 2003 में एनपीएस को लॉन्च किया गया था, यानी न्यू पेंशन स्कीम. अब पहले क्या होता था, द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर हायर्ड बिफोर 2003, इफ दीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर डेड देन देयर वाइव्स विल गेट कंप्लीट पेंशन. बट एनपीएस आने के बाद एक रूल बनाया गया कि अगर 2003 के बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर ज्वाइन करते हैं सर्विस को एंड इनकी डेथ हो जाती है देन द वाइफ विल नॉट गेट द पेंशन. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस कोर्ट हेल्ड दैट द वाइफ विल गेट पेंशन इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में बोला गया था that equal pay for equal work is not a fundamental right. Equal pay for equal work is not a fundamental right. Rather, it is a constitutional goal. Under Article 14, 16 and 39 of Indian Constitution. इसके बाद हमारे सामने केस आता है अनवर अली वर्सेस State of West Bengal. Ab in this case, it was held that the concept of rule of law is applicable against procedural as well as substantive laws. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. Up in this case, section number 303 of IPC was declared to be unconstitutional by the Supreme Court because it was found to be violative of Article 14 of Indian Constitution. अब इस केस को हम BNS में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 303 ऑफ आईपीसी में सिर्फ सिंगल पनिशमेंट गिवन थी विच वाज ऑफ डेथ पेनल्टी. वहां पे कोई लाइफ इंप्रिजनमेंट या कोई ऑल्टरनेट पनिशमेंट गिवन नहीं थी. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर कैन नॉट बी सिंगल पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी. दिस विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है जॉन मल्लमट्टम अब in this case it was held that section number 118 of Indian Succession Act is violative of Article 14 of Indian Constitution. अब section number 118 बोलता था
कि अगर किसी भी क्रिश्चियन को एक प्रॉपर्टी मिल रही है इन इनहेरिटेंस के थ्रू किसी भी क्रिश्चियन को एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, then this person cannot sell off this property. This person cannot sell off this property for 12 years. For 12 years. यानी 12 साल तक इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी को एक क्रिश्चियन बेच नहीं सकता. Now this rule was held to be unconstitutional because Supreme Court held that in no other personal law this rule is there. यानी मुस्लिम लॉ या हिंदू लॉ में ये सेम रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई क्रिश्चियंस के रिस्पेक्ट में भी ये रूल अप्लाई नहीं करना चाहिए. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्जा. अब इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द रूल ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑन मैरिज. यानी एयर इंडिया में रूल था कि जैसे किसी भी एयर हॉस्टेस की शादी होगी उसी टाइम इनको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी. दिस रूल वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बाद हमारे सामने केस आता है बाल्को वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इन दिस केस it was held that there can be no review of economic policy of the government. There can be no review of the economic policy of the government unless the act itself is unconstitutional. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है एम स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स. अब इस केस में क्या हुआ था, देयर वाज एन इन कैंपस रिजर्वेशन in AIIMS. Here the Supreme Court declared the in-campus reservation to be unconstitutional as it was violative of Article 14 of Indian Constitution. यहाँ पे एक रूल था कि 50% of PG seats will be reserved for the AIIMS pass outs. एंड इस रूल को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. अब हियर देयर वाज अ कंडीशन दैट इफ यू हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन देन यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट द पंचायत इलेक्शंस. दिस रूल वाज हेल्ड टू बी वैलिड and it was not violative of Article 14 of Indian Constitution. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है चिरंजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे बोला गया था that even a single person can constitute a class. Up in this particular case, Supreme Court by 4:1 majority held that ban on the entry of women of the ages of 10 to 50 years. 10 से लेकर 50 साल तक की एज की जो वुमेन है इनकी एंट्री पे जो बैन लगा था, दिस बैन वाज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. This ban was held to be unconstitutional as it was violative of Article 14 of Indian Constitution. इसको आधार केस भी बोलते हैं. अब in this particular case, it was held that Aadhaar is valid, but it is not mandatory. It is not mandatory for opening a bank account, or for getting admissions, in schools. However, Aadhaar can be made mandatory. To identify the beneficiaries in subsidiary cases. यानी अगर आपको किसी को भी गवर्नमेंट की सब्सिडी देनी है तो यहाँ पे द गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स कि आपके पास आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए. दिस रूल
कैन बी मेड। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको एडल्ट्री का केस भी हम बोलते हैं। अब हमारी जो आईपीसी थी, यहां पर देयर वाज सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी which criminalized adultery, but in this particular case Supreme Court held that adultery must be decriminalized on the grounds of article 14 of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले क्या होता था, अगर वाइफ ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, इफ द वाइफ हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, देन द पर्सन विद हुम द वाइफ had an extramarital affair could be convicted of offense under section number 497 of IPC। एंड जिसके साथ वाइफ extramarital affair चला रही है, इस मेल पर्सन को आप 497 के अंडर पनिश कर सकते हो। लेकिन अगर आप BNS देखोगे, इफ यू विल सी भारतीय न्याय संहिता, तो यहाँ पे एडल्ट्री का ऑफेंस जो है उसको पनिशेबल नहीं डिक्लेयर किया हुआ है। एडल्ट्री इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इन दिस केस सेक्शन नंबर 377 ऑफ आईपीसी was declared to be unconstitutional। अब in this case section number 377 of IPC was decriminalized with respect to consensual same sex सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी अगर सेम सेक्स के इंडिविजुअल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं एंड यहाँ पे कंसेंशुअल तरीके से ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस विल नॉट बी एन ऑफेंस। इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 377 में रूल था कि अगर सेम सेक्स के इंडिविजुअल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं इवन इफ विद कंसेंट के साथ भी ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो ये एक ऑफेंस होगा। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 377 वाज डीक्रिमिनलाइज्ड। एंड अगर आप बीएनएस देखोगे, बीएनएस में सेक्शन नंबर 377 की एसेंस को कंटिन्यू नहीं किया गया, यानी बीएनएस में भी सेम सेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। यू कैन राइट दैट अंडर भारतीय न्याय संहिता सेम सेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट डिक्लेयर्ड टू बी एन ऑफेंस। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी डन। अब इसके बाद एक लास्ट केस हम करते हैं कॉमन कॉज सोसाइटी versus Union of India। In this case, it was held that right to live with dignity includes the right to die with dignity। And Supreme Court declared that will and passive euthanasia is valid and not violative of Article 14 of Indian Constitution। यानी if a terminally ill patient wanted to end his or her life, then it will not be an offense। एंड अगर आप BNS देखोगे, इफ यू विल सी भारतीय न्याय संहिता, यहाँ पे अटेम्प्ट टू सुसाइड को अब ऑफेंस नहीं माना गया है। Attempt to suicide is no longer an offense under BNS. लेकिन under IPC, this was declared to be an offense. Attempt to suicide was declared to be an offense. अब एक लास्ट केस हम कर लेते हैं। इस केस ऑफ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको हम
ट्रांसजेंडर्स केस भी बोलते हैं. अब in this case, court held that transgenders have the right to equality under Article 14 of Indian Constitution. Supreme Court also held that transgenders can be considered to be included in OBC category, can be considered to be included in OBC category for the purpose of reservation in educational institutions. They can also be considered as other backward classes for reservation in the government jobs. And Article 15 और Article 16 का benefit भी transgender community को मिलेगा and they will be included in OBC category. इसके अलावा it was also held that the transgender community has a right under Article 19 of Indian Constitution. Article 19 of Indian Constitution to move freely at any place. And under Article 21 of Indian Constitution, transgenders will be considered to be as a separate sex. दैट इज वाई आप देखते होंगे जितने भी फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, अब वहां पे एक थर्ड कैटेगरी के बारे में भी ऑप्शन आता है. दिस वाज बिकॉज ऑफ द जजमेंट ऑफ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसके अलावा यहाँ पे भी बोला गया था अंडर आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर कल्चर मस्ट बी प्रोटेक्टेड. अब एक एकदम लास्ट केस हम करते हैं, राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. अब यहाँ पे हुआ क्या था, एक रूल बनाया गया था दैट इफ यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस then you must have passed at least 5th standard. अब in this particular case it was held that this condition is valid and not violative of Article 14 of Indian Constitution. तो ये केसेस हमको याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 14.